Kakinada Kraken will want to crack open the Vizianagaram Ninjas' winning streak. The corners come in as Akim Gopi and Pavan Venkatas. वहीं पर हम काकीनाडा कैक्टस की स्टार्टिंग 7 पर सबसे पहले नजर डालेंगे गंगा बाबू जो कि राइट पे नजर Kraken have won the toss and of course Vizianagaram Ninjas will be raiding first and Chekka Nagababu probably will be the man. Yeah, there he is. He'll be starting out there. Number 11 on the jersey and the left corner. Well, there we go. 7-2 right points and Satyendra Mahela is happy. The coach is really impressed. जहाँ पे डिफेंडर्स ने पूरी तरह से अपनी तरफ बोल बाला जो था वो रखा था, लेकिन काकीनाडा क्रैकन्स चाहेगी कि शुरुआती लम्हों and see what they have attacked. They have also attacked Basu Sheikh, who's another raider going out there, and look at that on that right cover. मुकाबला खेल चुकी है विजयनगरम निंजास, वहां पर जीत दर्ज की है। जीत छोटी हो बड़ी, लेकिन जितनी छोटी मार्जिन से होती है उतनी बड़ी जीत होती है। लेकिन यहाँ पर कोच की तरफ चली जाएगी तो डिफेंडर ने वो जाने नहीं दिया है, थोड़ा सा एडवांस चले गए थे। Avinash Lost Chekka Nagababu, their top raider, and they've lost the review as well. No more review. That's it, gone for the entire match. It was not the way to stop it. Netati Kanakaraju again, second time he wanted to go for some Tamil playing teams. They were full house. The covers were not in the chain, and that was a problem. पहले 5 मिनट में ही, लेकिन अभी 2 प्लेयर्स को और गवाएगी। हालांकि रिव्यू परमानेंट चला गया, आपके सीने में आग लगी है। पिछले मुकाबले में जो दर्द मिला था उसको आप मरहम लगाने का जो सही समय वो यही है। बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़ी गलती भी हुई है। Yeah, and he went in for the ankle hold at the right thinking. He's got that bonus point. तो टच करने का प्रयास किया था, जॉन ने फ्रंट से ब्लॉक can not probably have that review. Kakinada Kraken. I think they're over dependent on him. Oh, सामने से ब्लॉक पैर निकालने की कोशिश। Just was twisting his bar handle mustache, but look at this for a block and that shoulder lock that came in. Brilliant. Komoju Sai along with the Avinash. जंप लगाई है, निकलने की कोशिश की है, बैक होल्ड किया है और इस बार ऐसा लग रहा है कि अविनाश पूरा नाश करने की फिराक में, लेकिन विजयनगर निंजास के दोनों डिफेंडर्स, दोनों योद्धाएं पकड़े हुए, एक अपर बॉडी लोअर बॉडी, बच गई विसिल, कर लिया है पहला सुपर टैकल विजयनगर निंजास ने। Yeah, the problem was he was jumping. There you go, Satyendra Mahela. He's not happy with that. Look at that. Look at the direction of the jump. He was jumping towards the lobby. That became the problem. What a nice way, I'm telling you this, and an amazing substitution. Chaitanya brought in Paleti Narayana. Thinking, I should say, because he already knows that the super tackle was one inflicted. Bonus attack. का समय आ गया, पहले अविनाश को सुपर टैकल किया गया था विजयनगरम निंजास की तरफ से। इस बार अविनाश चाहेंगे कि सुपड़ा साफ किया जाए, ये बदले की आग थी। Narayana should have been brought back. He was not there on the mat. Look at this. It was a very weak attempt from Akim Venkatagopi. Should. लेकिन अभी एक ऐसा समय चल रहा है जहां पर एक प्लेयर बिल्कुल रेड और फॉर्म में नजर आता है और उसका चलना बहुत जरूरी हो जाएगा। फिर से सामने से ब्लॉक करने का प्रयास किया गया है। अविनाश एक बार फिर से नाश करने के लिए तैयार, कुछ ना कुछ बेहतर करने की तरफ देखता है और हर मैच में किया भी है। I love the jump. रिव्यू नागबाबू के विरुद्ध आपको कुछ बेहतर करना पड़ेगा। ये वो प्लेयर है जो मैच के पैराडाइम को कभी भी पलट देता है। बैक होल्ड किया है, 8 रेड लगाइए, 6 पॉइंट निकाले, लेकिन अगले पॉइंट के लिए इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करना पड़ेगा या रेडर से बोनस +2 सुपर रेड लगा दी है एक सुपरस्टार प्लेयर ने। On to his horses. After the bonus, he goes for an attempt on the back hold and then takes off. अविनाश ये एक प्लेयर काकीनाडा क्रैकन्स के लिए जो लगातार प्रयास कर रहा है। इस बार घेराव तो किया था, लेकिन अपने आप को बचाते हुए सरप्राइज कर दिया था डिफेंडर्स को। लेकिन कोच साहब ने थोड़ी देर पहले कहा था कि आपके गेम को थोड़ा डाउन करना है, वो मेरी समझ से बाहर था। सही था कि आप एग्रेसिव थोड़ा कम हो सकते हैं, एडवांस टैकल पे मत जाइए, लेकिन पेस को डाउन मत कीजिए। नागा बाबू दूसरी तरफ से सुपर 10 लगा चुके हैं। आप आखिरी 10 मिनट में होते तो समझ and there you go. As a left corner, you know, Vizianagaram Ninjas, the defense is kind of actually unsettled. Once again, as I said, defense, but finally they get settled down. जॉन को बहुत ज्यादा बाहर जाकर
पहले विजयनगरम निंजास पिछड़ रही होती है, काकीनाडा कैकन्स आगे चल रही होती है, जैसे गेम के पेस को डाउन। Still with Ganga Babu. They know. He is searching for a bonus. He's a short raider. He will not get bonus. He will rely on the hand touches. And they have napped him. They have napped him. It's Basu Sheikh. Bonus point, Kakinada And for a Kraken. short raider, Mono, it's 1 so plus difficult 2, to get 3 that bonus point, but he's got it. Vijayanagaram Ninjas. Yeah, nice that he's got it. Kakinada Kraken. पहले अगर आप 25 सेकंड की बात करेंगे तो वहां पर कोई भी बोनस के लिए मौका नहीं दिया था, उन्होंने वहां पर ही ट्राई किया था, सक्सेसफुली यहां मिला है बोनस और उसके बाद ही अटैक कर दिया उनके ऊपर। बोनस दिया है लेकिन Actually, he goes near Vari Mahesh, and that allows the left cover to come play high line. That's what it is. And Kari John is claiming against Pawan Venkatakumar, but he's denying it. Pawan is denying it. There is no review, and Kari John has gone into the lobby. 1 point, What is it? Kakinada Kraken. Jersey number Okay. 4. Can we see? Did he get a touch? Green card. Oh. Jersey number 4. Vijayanagaram Mono, Ninjas. what do you think? The next one becomes the red card, so you cannot play one match. So here, since because it's a format, it's good. As Basu Sheikh once again commits the error. वहां पर भी किया गया था। बिल्कुल। और शायद कल परसों ही हमने क्रिस्टियन मैच में भी सेलिब्रेट किया था। The wave is hitting the shores of Kakinada, and that's from the Vizianagaram Ninja. Right corner. Now Kari John needs to play back. Kari John, just save yourself from that left corner position. There, Kari John attacks it. Wonderful tackle from Kari John. I was expecting he will go attack him, but Kari. एक लंबे समय के बाद डू और डाई, ये बोनस पॉइंट मिल नहीं सकता, टच पॉइंट की तरफ जाना पड़ेगा, बैक दिखाई अविनाश ने आपको बचाने के लिए। Unnecessary. Double pressure on them. That is where it is so good. And that is why Vizianagaram Ninjas have won 3 matches out of that. And that defense. Ram Babu needs to go back. एनर्जेटिक प्लेयर और वो एनर्जी कम भी आ रही है, लेकिन अभी वामशी के लिए थोड़ी सी कोशिश होगी कि पॉइंट निकाला जाए, हाइट का एडवांटेज। Moju Satyasai should. See, that's what I was trying to say. See how far near the midline he's attacking Boligala Vamsi. He's a tall raider. Outside the balk line. Maybe that is what it is. Yeah. दोनों प्लेयर बिना टच के लॉबी में चले गए थे, पहले डिफेंडर गया, उसके बाद रेडर भी चला गया था। यहाँ पर भी पॉइंट लेकर जाएंगे, पहले इनके ऊपर एडवांस टैकल किया गया था, यहाँ पर भी एडवांस टैकल किया गया था, पहले लेफ्ट कॉर्नर ने गलती की I think he's reduced one. Kakinada Kraken Satyendra Mahela should be sticking on to Singampalli Avinash. That's it. This is why I did not under substitution in the raider from the bench. You cannot get the points right away in a pressure situation. Nice angle hold though from the left corner, but for execution, yeah. कोच साहब ने कहा है कि आपको बोनस के लिए जाना है, लेकिन ये क्या हुआ? Really should have, if some other defender would have touched them, but nevertheless 1 point. Yeah, this raider has to be on the bench. Somehow they need to put him on the bench. Oh, that'll help. Raider is out for sure. Gonna happen only on Mars. We are on Earth still. Wonderful dash. It needed 2. Kumar. And there is Akim Venkata Gopi out there, but the raider goes in for the attack. 3 defenders, Basu Sheikh, Akim Venkata Gopi, Pawan Venkata Kumar. 3 defenders. It's just 2 tackles. That's it. Vijayanagaram Ninjas. Comeback window. Just a small niggle. But look at that. He did not expect that, isn't it, Mono? He did not expect Basu Sheikh will come in with that surprise tackle. It's a super tackle, and I think it's like a child who's gone into the English examination when it was a mathematics paper. That's what has happened. की तरफ भी घुसते चले गए। ये लीजिए। हाँ, मतलब or Hindi paper, and just imagine mathematics in front of you. That's what is going to happen. Oh, surprise! Get 2 points. Kakinada Kraken. He can be the things when your top batter is on 298. Oh 1 point, Lord! Kakinada Kraken. Jersey number 17. No, at least now, it's going to be a do or die raid now for the Vizianagaram Ninjas. At least now, send in Cheka Nagababu. Let's take away something big from this match. Yeah, nothing here. It's all captain. It's not the captain, but still, the captain is on the mat. Such an anticlimax this. But he'll get some points though. Mono, but I'm disappointed. Yes, Vizianagaram Ninjas have won this match. Probably qualified for the Super Fours. But
Chikka Nagababu has been stranded on 18. Number 11 He's also. stranded on 18. Number 11. He got a Thunder 20 in the morning. It could have been a history 11 in the also. making. But Vizianagaram Ninjas have lost that milestone, 10 but also. get qualified for the Super Fours. And has Kakinada 3 Kraken points. Vijayanagaram been Ninjas. sent out? Yeah, it's a super raid though for Akela Pavan. And Kakinada Kraken, I think, have been eliminated maybe. Match over. देखिए One day it could have been Cheka Nagababu, but yeah, he was stranded at 18 points. It's like, as I said,